Hare Krishna. Let's begin the session with prayers. Namo Om Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय श्री श्री गौर निताय की जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय हरे कृष्णा। तो आज हम 13वें अध्याय को आगे बढ़ाएंगे। We'll continue to discuss the 13th chapter. We completed up to shloka number 12 in the last class. पिछले सत्र में हम श्लोका नंबर 12 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। तो श्लोका नंबर 8 to 12 was one set of shlokas. तो इसमें भगवान श्री कृष्णा ने हमने इस 4-5 श्लोक में क्या सीखा हमने। So we learned about what is the real process of knowledge. विद्या का विधान, विद्या को प्राप्त करने का विधान क्या है। What is humility? What is the meaning, real meaning of humility? मतलब दैन्यत्व, उसका असली मतलब क्या है। What is non-violence? अहिंसा का असली मतलब क्या है। What is tolerance? सहिष्णुता किस हद तक और कब और किसे हमें इस बात की ज्ञात भगवान श्री कृष्ण ने कराया। And by the purpose of Srila Prabhupada, we understood it more specifically. We also learnt about simplicity, and we learnt about cleanliness, shaucham, how cleanliness has two aspects, the internal cleanliness and external cleanliness. So external cleanliness is the acts of taking bath, keeping ourselves clean, or by ablutions. तो स्नान करने से, मुंह धोने से, दांत को साफ रखने से, ये सब these are the external aspects. बहिरंग शुचि, अंतरंग शुचि के लिए हरिनाम संकीर्तना, हरिनाम जपा by chanting and listening through the ears. And then we learned what is real renunciation. So asli, what is the purpose of renunciation and what is the way of renunciation. फिर हमने पढ़ा self control means one should not accept anything which is detrimental to the path of spiritual progress. सब लोग बोलते हैं ना, संयम रखो, self control रखिए. What is the meaning of self control? What are the parameters? क्या है वो बुलेट पॉइंट्स जिसको हमें याद रखना है और वैसे हमें जीवन को आगे बढ़ाना है. So real renunciation means that is the act of self control. And what is self control? आत्म संयम का मतलब क्या है. One should not accept anything which is detrimental to the path of devotional service. अनुकूल्यस्य संकल्प, जो डिवोशनल सर्विस के लिए अनुकूल है उसको हमारे जीवन में एक्सेप्ट करना. And that which is not conducive for devotional service, to reject that particular thing. So it is not about rejecting wife, it is not about rejecting children, it's not about rejecting society, it's not about stopping to earn, because a person can stop earning and still be materialistic. At the same time, we can see many instances of people who keep working outside and still are renunciated, who stay with families, the children, wife, and are still renunciated. Of course, yesterday we talked about what is real renunciation. That
simply getting married and then saying that, oh, now I've realized that by Bhagavad Gita, by Prabhuji's lectures, Prabhupada's lectures, that all this is Maya, so I should give this up. So Maya is not related to a particular person or a thing. Maya क्या है? Maya is the approach to a particular person or to a thing. The way we live our life can be Maya conscious or Krishna conscious. So, कृष्ण भावनामृत संघ, हरे कृष्णा मूवमेंट, हरे कृष्णा आंदोलन का मकसद ये है कि लोगों को सही तरीके से समझाए कि कैसे इस आधुनिक दुनिया में भी, आधुनिक युग में भी स्थानीय स्थिति श्रुतिगताम तनुवान मनोबी, जहां पे हैं हम वहीं पे स्थित होके कैसे हम कृष्ण भक्ति को आगे बढ़ा, खास तौर पे गृहस्थों के लिए. सो सेंसेस शुड ओनली बी ग्रेटिफाइड टू कीप द बॉडी फिट. इंद्रिय सुख भी चाहिए, लेकिन किस दिशा में हमें चाहिए, क्यों चाहिए इंद्रिय सुख? इट इज डेट्रीमेंटल, the pleasure of the senses is detrimental, then why should we even go after it? So Prabhupada very practically explains here, the senses should only be gratified to keep the body fit. Yuktahara viharasya, मतलब युक्ता, that which is the quantity that is required, quality also is required, the quality of sense gratification, the quantity of sense gratification required to keep us on the path of spiritual life. Because we are not pure devotees, हम शुद्ध भक्त नहीं है कि हम त्याग संन्यास इस दिशा में हम बढ़े. So we have to tread the path slowly, cautiously, but surely and steadily under the guidance of devotees and the instructions of Srila Prabhupada. We should not be whimsical and insensitive when we say that I renunciate my wife, I renunciate my children, I renunciate my wealth. In fact, Prabhupada has very clearly mentioned in 1977 that no more sannyas. Prabhupada ने up to 1977 ISKCON में बहुत लोगों को संन्यास दिया था to set an example, and he was there for practical correction. But he also knew that this cannot go on forever in ISKCON. So in 1977, he very categorically said, from अब से कोई संन्यास नहीं, now no more sannyasis in ISKCON. परंतु उसके बाद भी the deviant system that is followed by many other ISKCON temples continues to give sannyas diksha and continues to occupy the position of gurus. Hundreds of sannyasis of what is so-called ISKCON have fallen down. Even today, the basic standard of a sannyasi, Nirjala Ekadashi, once in 15 days, बहुत सारे सन्यासियां so-called ISKCON में नहीं करते हैं. That is the minimum expected from a sannyasi. There's minimum standard expected, but it's very difficult for them to follow. And many of the hundreds of sannyasis, they were given sannyas and they fell down. So it's a bad precedence that is being set. So in Hare Krishna movement, ISKCON Bangalore group, we follow the particular instructions of Srila Prabhupada, where we follow the Ritvik method and we follow Srila Prabhupada as our Diksha Guru. Okay, that was very important, so I inserted it here in our discussion. So, why we should keep the body fit? Body, we are not the body. ये पहला सीख है भगवद गीता में. तो हमें क्यों बॉडी के बारे में सोचना है? सोचना पड़ेगा. जब नाव में बैठे हैं, नाव के बारे में सोचना पड़ेगा, स्पेशली व्हेन वी आर इन मिडल ऑफ द वाटर्स, मिडल ऑफ द ओशन. तो हमें नाव के बारे में, जहाज के बारे में सोचना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा.
क्योंकि उसी जहाज के सहारे हम जाने वाले हैं उस पार. So, due respect should be given for the body. Although we are not the body, due respect should be given for the body. It must be taken care of. Health must be taken care of. The material relations should be taken care of. Family, friends, society. Due respect should be given. We should not indulge. उसी में उलझना नहीं है. Okay. The most important and uncontrollable of the sense is the tongue. The senses should only be gratified to keep the body fit. Why we should keep the body fit? So that one can discharge his duty in advancing in spiritual life. अपना मानव जीवन का जो लक्ष्य है, what is that? To progress in spiritual life and to get the ultimate, to gain the ultimate goal. तो अंतिम लक्ष्य क्या है मानव जीवन का? कृष्ण प्रेम, और तत्पश्चात कृष्ण प्रेम भक्ति में कृष्ण का, राधा कृष्ण का सेवा निरंतर करते रहना. सो इन टुवर्ड्स दैट वी मस्ट बी प्रोग्रेसिंग. एंड द बिगेस्ट एनिमी इज more than the mind, it is the tongue, because mind is dictated by the intake of what is going into the body, food and thoughts, and that food and thoughts, and that food and vacha, the what we say, what we think, is mainly controlled by the tongue. So the two inputs for tongue, for taste and for speech, so we have to keep it regulated. तो उसको हमें नियंत्रण में रखना चाहिए. तो कंट्रोलिंग द माइंड मीन्स कंट्रोलिंग द टंग. जीव को अगर हम कंट्रोल करेंगे, तारा मध्य जीवाति लोभोमय सुधुर्मति. तो इन द महाप्रसादम प्रेयर्स वी चैंट दिस पर्टिकुलर फ्रेज, तारा मध्य जीवाति. जीवे फैले विषय सागरे. The soul is lost in the ocean of material gratification. Tara Madhya, amongst this, the senses, Tara Madhya Jivati Lobomai Sudurmati. So amongst this, the tongue is the most greedy, Lovi, Lobhomaya, Sudurmati, and it is like a mad elephant. If it enters the garden of our spiritual cultivation, it can destroy it. अगर कोई पागल हाथी बगीचे में जाएगा, सब कुछ तहस नहस कर देगा. So this, to this end, we have to control the mind. That is possible by controlling the tongue, and by controlling the tongue, we can also keep our body, mind, and soul fit. So if one cannot, if one can control the tongue, then there is every possibility of controlling other senses. अगर पहला कदम सही है, तो बाकी सब कदम ऑटोमेटिकली वी विल अज्यूम दैट इट इज गोइंग टू बी राइट. अगर मेरा पहला कदम ही गलत है, तो उसके बाद अगर मैं सब कुछ सही कर रहा हूं, आई एम वॉकिंग प्रॉपरली, आई एम टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग एल्स, बट पहले कदम ही गलत दिशा में था, तो वी विल एंड अप गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन. So the first and most important sense organ to control is our tongue. That's why Prabhupada says, eat only Krishna Prasadam, chant Hare Krishna mantra, read and hear Srimad Bhagavatam. So by systematic regulation, tongue should always be engaged in tasting the remnants of foodstuffs offered to Krishna. तो नियंत्रण में जीव को कैसे रखेंगे? कृष्ण प्रसादम, केवल कृष्ण प्रसादम का सेवन करके, एंड बाय चैंटिंग हरे कृष्ण मंत्र. ये दोनों जीव का कार्य है, टू स्पीक एंड टू ईट. एंड दिस टू इफ कैन बी रेगुलेटेड, वी कैन कृष्णाइज. अगर इसको कृष्ण भावनामृत में हम कार्य करना सिखाएंगे, बाय ईटिंग कृष्ण प्रसाद एंड बाय चैंटिंग हरे कृष्ण मंत्र, then there's a good possibility that we will progress rapidly in spiritual life. Then what we learned what is false ego in the last class, how I am Brahmasmi, the real meaning of Aham Brahmasmi. Then we talked about the 4 things that will make one happy. क्या 4 जो नियम है
या जो हमारे जीवन में हमें उतारना है, वो क्या ऐसे चार चीज हैं। देन वी टॉक्ड अबाउट हाउ डिवोशनल सर्विस इज एटर्नल। आत्मा अ, सनातन है, भगवान सनातन है, और आत्मा भगवान के प्रतीक जो भक्तिमय सेवा करता है, द डिवोशनल सर्विस इज ऑल्सो एटर्नल। ऐसे नहीं कि कहीं पे जाके खत्म हो जाता है, नो। डिवोशनल सर्विस, the attitude of devotional service and the act of devotional service is eternal. And we also learned about why one becomes subordinate to material nature. क्यों जीवा भौतिक जगत का मोहताज हो जाता है। Although material energy is inferior energy, the soul is the superior energy. Yet, in an unfortunate circumstance, uh, we have become the the puppets of material energy, that is guided through our uncontrolled senses. So, uh, and why it has happened? The last sentence of the 12th shloka was the purport. What Prabhupada says, due to rebellion against Supreme Lord, one becomes subordinate to material nature. क्योंकि हम कृष्ण से बहिर्मुख हो गए, कृष्ण बहिर्मुखा जीवा, कृष्ण भूलिया जीवा। What happens when one forgets Krishna? Immediately, the next thing is Bhogavancha kare. He start thinking about self sense gratification. So then what happens? Pashate Maya, Jhapati adare. So Maya is waiting in the corner. The moment, it's like a kidnapper who is waiting for the child to get distracted, who is waiting for that one moment where the child takes its hands off, the fingers off the parent's hand. So for that one moment, the kidnapper is waiting. Kidnapper is waiting, 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 like just like a tiger that's about to pounce on a prey. ऐसा नहीं कि 1 किलोमीटर से दौड़ के आएगा, धीरे 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 आएगा, और वो देखता रहेगा। जिस दिन जीवा कृष्णा से बहिर्मुख हो जाएगा, उसी तत्क्षण माया उसको झपटिया धरे। पाशाते माया झपटिया धरे। Immediately the person will be kidnapped away from Krishna, like how the kidnappers kidnap children. So that is how one becomes subordinate to material nature, and one must know and be convinced of this truth. ये कठोर सत्य हर मानव को पता होना चाहिए। Then only he can come back to his senses and walk the right path. Otherwise, he will continue to think what he is doing is right. So, जीवन में हम our particular personal life or family life or social life, सामाजिक जो जीवन है, community living है, it matters a lot. Therefore, we should always be in community life, devotional community life. There will be all kinds of people. That's the second matter. वो तो हर जगह हमें मिलेंगे, but we have to be in the community and keep associating with the right kind of people, because प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इस्कॉन भी एक हॉस्पिटल की तरह है। यहाँ पे जो भी आ रहा है, वो आ रहा है ट्रीटमेंट के लिए। क्या ट्रीटमेंट? मेटेरियलिज्म का ट्रीटमेंट के लिए। जो भी आते हैं वो आध्यात्मिक प्रगति करना चाहते हैं, बट उनका गुण और कर्म लाखों जन्म से जो वो लेके आ रहे हैं अपने सूक्ष्म शरीर के द्वारा, तो द सटल बॉडी कैरिंग देयर प्रीवियस कर्मा एंड बिहेवियर एंड कैरेक्टर, and that keeps manifesting. It's like, it's not that the patient has come to the hospital, now he is all right. No, the patient has come to the hospital, he is going to be diagnosed, and then he knows that he is diseased. That is the first thing. So one good thing about the person who has come is he knows he is diseased, he needs help, he needs treatment. लेकिन जब तक ट्रीटमेंट चलता रहेगा, तो बाकी जीवन का जो जो पिछले जन्मों का जो गुण और स्वभाव है,
कर्म है वो मैनिफेस्ट होता रहेगा. सो द मोर डीपली एंड कन्विंसिंगली or in a more pure way we get attached to Krishna, the sooner and better we will get off the karma. वरना हमारा कर्म बीज बन के हमने बो के बहुत जन्मों से आ चुके हैं, तो वो बीज धीरे धीरे अंकुर बन जाएगा, फिर वो बड़ा पेड़ बनेगा, उसका कड़वा फल हमें खाना पड़ेगा. There's no escape from it. If the only way of escaping from it is by always keeping ourselves focused on Krishna, Guru, devotees, community, and devotional service. Always be in association with these things. How very a simple example is given. How the residents of Ayodhya were. अयोध्या के जो निवासी थे, तो दे लेड अ लाइफ ऑफ संस्कृति. हर व्यक्ति, हर नागरिक अयोध्या में संस्कृत थे, मतलब दे वर वेरी वेल ट्रेन्ड इन कल्चर, लेड अ लाइफ ऑफ संस्कृति. फिर इट्स कॉल्ड अ सिटी ऑफ थ्री टेल्स. दूसरा एक प्रदेश है किष्किंधा. किष्किंधा इज दे लेड अ लाइफ ऑफ प्रकृति. किष्किंधा वानर जो थे, प्रकृति प्रकृति कैसे उनको नचाया वो नाचते थे. सो इट इज लाइक एंड सम एनिमलिस्टिक वे ऑफ living, but in a more civilized way, because they were vanara, they were not apes and they were not human beings. Then Lanka. So Ramayana में it's a tale of three cities. One is Ayodhya, सात्विक जीवन, किष्किंधा, राजसिक जीवन, और फिर लंका, तामसिक जीवन. So they led a life of विकृति, राक्षसी स्वभाव, Ravan and his citizens. So, so in Ramayana we get this specific references how our community, the where we live, whom we associate with matters so much, because we become like them. So we must choose our friends, we must choose our associates very carefully. What we listen to every day, what is the input that is coming to our mind, what is the input that is going into our body, it determines what is the output that is coming out of our life. कहाँ पे हम जाने वाले हैं, इसका निर्धार कहाँ से होता है, क्या हम सेवन कर रहे हैं इस देह के लिए, इस मन के लिए, इस आत्मा के लिए. So today, unfortunately, we are living in a godless civilization. And what is the effect of this godless civilization? कृष्ण बहिर्मुखा जीवन, इसका असर क्या है हमारे समाज में? Relationships have become meaningless. रिश्तेदारी में, नातेदारी में कोई मतलब ही नहीं है. फिर then arguments have become baseless. जो तर्क, पहले तर्क तर्क पे आर्गुमेंट होता था, आजकल आर्गुमेंट छोटे छोटे चीजों में, बेमतलब चीजों में हो जाता है. आर्गुमेंट्स हैव बिकम बेसलेस. ईगो के कारण, बस ईगो रबिंग, ईगो मसाजिंग होता है. एटीट्यूड हैज बिकम केयरलेस. मतलब सब एवरीबडी इज थ्रोइंग द कॉशन टू विंड. Eat, drink, be merry. Who has seen whether there's next life or not? Hedonistic philosophy. So fast progressing towards self-destruction. And then needs have become endless. कोई अंत ही नहीं है जरूरतों का. So there is a saying, the God can fulfill our need, but he cannot fulfill our greeds. क्योंकि उसका कोई अंत ही नहीं होता है. बट हमारा नीड्स भी आजकल बेसलेस और एंडलेस हो गया. बिकॉज वी फॉल फॉर एवरीथिंग. हाँ, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए. एक कार आ गया, 10 कार आ गया, फिर भी संतुष्ट नहीं है. नेक्स्ट मॉडल कौन सा लेना है, यही पे इज वेटिंग फॉर द नेक्स्ट मॉडल टू कम. एंड लाइफ हैज देयरफॉर बिकम होपलेस. तो जीवन ही, मतलब देयर इज नो बेसिस, देयर इज नो, इट्स बिकम रडरलेस. कोई डायरेक्शन नहीं है, इधर उधर जैसे हवा बह रहा है, जैसे समय और संदर्भ लेके जा रहे हैं, उस दिशा में समाज बह रहा है. Unfortunately for us all, we have somehow come to the shelter of the lotus feet of Prabhupada, and we must continue to endeavor
to remain at his shelter. So we'll move on to sloka number 13, chapter number 13. Neyam yattat pravakshami yajnatvam tvamrutam anadimat param brahma nasattan nasaduchyate. So what is Krishna telling here? I shall now explain the knowable, the knowing which you will taste the eternal. Neyam yattat pravakshami. मतलब जिस जिस चीज को जानना चाहिए उसके बारे में मैं बताऊंगा. दिस इज बिगिनिंग लेस एंड इट इज सबऑर्डिनेट टू मी. ये ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते अनादि मत परम ब्रह्म न सत्तन नासद उच्यते. न सत्तन न असद उच्यते. What does it mean? It is called Brahman. So, and then the spirit, and it lies beyond the cause, Anadi, and the effect of this material world. Mat Param Brahma. So, what is the meaning of Mat Param Brahma? Prabhupada gives in the word-to-word meaning, subordinate to me. The spirit is subordinate to me. The Brahma Jyoti and Brahma Jyoti का जो अंश है, with all of us, also subordinate to Krishna. So, nasat tan na asat uchyate. So, it lies beyond the cause and effect of this material world. So, Prabhupada ji in his purport, he says, the Lord has explained the field of activities and the knower of the field. तो अब तक हमने we talked about kshetra, kshetragna. He has also explained the process of knowing the knower of the field of activities. कैसे हम क्षेत्रज्ञ को जान सकते हैं. Now he is explaining the knowable, both soul and super soul respectively. तो क्षेत्रज्ञ दो तरह का क्षेत्रज्ञ है, एक आत्मा और दूसरा परमात्मा. By the knowledge of the knower, both the soul and super soul, one can relish the nectar of life. कैसे हम जीवन का रस हम पी सकते हैं, the real rasa of life, how we can taste the nectar of life by knowing what is Atma and by knowing what is Paramatma. Not just enough to know we are not this body, we must know that we are soul and there is super soul, we are subordinate to super soul. We are eternally servants of the super soul. And what is the function of a servant? एक नौकर का, सेवक का क्या कार्य होना चाहिए? सेवा. So to be in constant devotional service to the spiritual master and to the Supreme Lord. There is no specific date at which Jiva was born. Anadi. तो जब भगवान का आदि नहीं है तो उसका अंश का भी आदि नहीं है. Nor can anyone trace out the history of Jivatma's manifestation from the Supreme Lord. कब भगवान से हम सब, भगवान से कैसे हम आए, how we are part and parcels of the Lord, when were we created. So therefore it is beginningless, anadi. So that is what we are. We are powerful because we are part and parcel of the Supreme Lord. We are the sons of the Supreme Lord. So imagine the son of a very rich guy, how he is going to be, how मतलब कितना facilities है उसके पास. Similarly, we are the son of God, daughters of God, sons of God. So actually we are all very powerful. Why we have become powerless? Because we have gone away from Krishna. So जब बच्चे का उंगली पापा के हाथ से छूट जाता है, the child becomes powerless. कोई भी किडनैपर आके उसको हर के लेके चला जाएगा और वो कुछ नहीं कर पाएगा. The Supreme Lord as the super soul is the chief knower of the body. So it is called Pradhana Kshetragna Patir Gunesha. So it means that the Supreme Lord as a super soul is the chief knower of the body. तो इस देह के बारे में सारी जानकारी परमात्मा रखते हैं. आत्मा को भी ज्ञान है लेकिन आत्मा का ज्ञान लिमिटेड है. क्या आपको पता है आपके सर पे कितने बाल है? आप ही का सर है, आपको पता है कितने बाल है?
आपको पता है आपके शरीर के अंदर, ऑफ कोर्स इफ यू हैव रेड सम मेडिकल पार्ट ऑफ साइंस इन योर स्कूल, कितने हड्डी हैं आपके अंदर, और हर हड्डी में कौन सा मांस जुड़ा है, विच मसल इज अटैच टू विच, योर ओन बॉडी इट इज, इसे वी आर इन कंट्रोल ऑफ द बॉडी, आपको पता भी नहीं है आपके बॉडी में आपका क्या क्या मसल्स है। जो आप सुन रहे हो अभी, आपको पता है कितने मसल्स कान में है जो एक्टिव हो रहा है आपको इस जो प्रवचन है उसका श्रवण करने के लिए। आप देख रहे हो यूट्यूब जूम पे, तो देखने के लिए आपको पता है कितने सेंसरी ऑर्गन्स का मतलब कितने सेंसेशंस होता है, द रेटिना, द रॉड्स, द कोन्स, कैसे वो एक्टिव हो जाते हैं, कितने मतलब कितने मात्रा में वो एक्टिव है, आप ही का शरीर है। जब आप खाते हैं आपको पता है कौन सा मसल यूज हो रहा है, डू यू नो विच मसल इज बीइंग यूज्ड टू swallow, विच मसल इज देन यूज्ड टू टेक इट डाउन द esophagus, क्या हो रहा है आपके पेट में, क्या है आपके पेट में, क्या डाइजेस्ट कर रहा है, व्हाट इज द एसिड दैट इज डाइजेस्टिंग, व्हाट इज द नेम ऑफ द डाइजेस्ट एसिड, ये सब आप ही के शरीर के बारे में। सो दो इट इज माई बॉडी, आई डो नॉट नो एवरीथिंग अबाउट इट, बट द सुप्रीम लॉर्ड, super soul, knows everything, not only about my body, he knows about everybody, तो सारे जीवों के बारे में वो जानते, सो इज सर्व क्षेत्रज्ञ, so it is described as pradhana kshetrajna patir gunesha. So then in the Smriti it is said dasa bhuta harer eva nanyasya kadachana, the living entities are eternally in the service of the Supreme Lord, ये उनका सांविधानिक स्थिति है। So when the word Brahman is applied to the living entity, it is to be understood that Vijnanam Brahma as opposed to Ananta Brahma. So we are the Vijnana Brahma and Lord is the Ananta Brahma, Param Brahma. And Ananta Brahma is the Supreme Brahman, Supreme Personality of Godhead. So Ananta Brahma और पर ब्रह्मा is Krishna, and और हम क्या हैं, हम उनके अविभाज्य अंग हैं। So we are part and parcel of Krishna. We are called as Vijnana Brahma. So we will move on to the next shloka. Sarvata Panipadam Tat Sarvatokshi Shiro Mukam Sarvata Shutimalloke Sarvam Avrutya Tishtati. So here the omnipotence of the super soul is mentioned. तो कैसे सर्वव्यापी है, omnipotent, omnipresent, the Lord is. Everywhere are his hands and legs. सर्वथा पाणी पादम तत्, ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पे भगवान का हाथ और पैर नहीं पहुंच सकते, इट इज एवरीवेयर। देन हिज आईज एंड हिज फेस, सर्वतो अक्षी शिरो मुखम, उनकी आंख, उनकी नजर, उनका सर, उनका आनंद हर जगह है, सब कुछ देख रहे हैं, हर क्षण हमारे हर कार्य को वो देख रहे हैं, हम उससे एस्केप नहीं हो सकते, वी कैन नॉट एस्केप इट। He hears everything, sarvata shrutimal loke, loke, not just about you or me, entire universe, everything that is there in creation, he can hear it then. And in this way, the super soul exists. Sarvam आवृत्य तिष्ठति, हर जगह व्याप होके, सर्वव्याप्ति, भगवान परमात्मा तो आवृत्य है, so is present everywhere. So we can escape the law of justice of the land, but we cannot escape the law of the supreme law, the supreme being, that is the supreme person of Godhead Krishna. उनसे हम बच नहीं सकते, कुछ भी उनसे छुपा नहीं है। So as the sun exists, diffusing in its unlimited rays, so does the super soul. So Prabhupada explains what is the meaning of everywhere are his hands, everywhere are his legs. It means he is able to reach out anywhere. He can come anywhere at any time. He can do anything at any time, anywhere, using his hands and using his legs. And Akshi Shiro Mukham, Akshi Shruti and Avrutya is present everywhere. He is
all pervading. So all are existing in and on the super soul. वो परमात्मा आधार है जिसके ऊपर सब कुछ स्थित है. तो further Prabhupada says, therefore the super soul is all pervading. Sarvam avritya tishtati. So although 13th chapter up to 12th chapter 7 to 12, the most important bhakti yoga we have learned. But we need to learn the Jnana Yoga part also, not to become Gyanis, but to have the background knowledge of what body is, what soul is, and why I am doing this devotional service. So further, Prabhupada says in this purport, Supreme Lord can extend his hand without limit and the individual soul cannot. So हमारा कुछ limitation है, extension कुछ हद तक हम extend कर सकते हैं, लेकिन भगवान हर जगह सर्वव्यापी है, कहीं पे भी वो अपना हाथ डाल सकते हैं. So he is sitting in गोलोका, यहाँ पे आप भोग लगा रहे हो, तो वहां से वो आपका भोग को आपने जो अर्पण किया है उसको स्वीकार कर रहा है. It is this causeless mercy that the Supreme Lord is accepting whatever you are offering. Don't think that I am offering here, how the Lord is going to accept. He is sitting in Goloka. He is also sitting inside your heart as Paramatma. He is everywhere. And sitting in Goloka, he can extend his hand and he can take your offering. And in fact, his Angani Yasya Sakalendriya Vrittimanti is every organ can play the role of every other organ. वो ऐसा नहीं कि उसको हाथ फैला फैला के मतलब by extending his hand he has to take. Simply by seeing he can take. Because Angani Yasya Sakala Indriya Vrittimanti. His one organ can perform the function of the other organ. He can eat simply by looking at that particular offering. ऐसा नहीं कि वो आके वो उनको उसको लेके उनको मुंह में डालना है, केवल देखने से वो खा लिए और फिर immediately exactly the same similar to the prasadam that you prepared, it is he keeps it back so that we can take it as the bhoga that you kept, we take it back as prasadam and we feel that oh it is as it is. Actually Lord has eaten and then he has replaced it with a similar looking prasada. That's why prasada tastes so nice. So many of the women the Matajis who cook, they can vouch for this fact कि मतलब जब offering हो जाता है स्वाद बढ़ जाता है because Lord has eaten. So Goloka eva nivasati akilatma bhuto. Although he is always engaged in pastimes in his transcendental planet, he is all pervading. गोलोक एव निवसति अखिल आत्मभूत, ऐसे ब्रह्म संहिता में बोल रहे हैं. So the artha and the paramartha, so material life versus spiritual life, we must understand the difference and we must progressively march towards our spiritual goal, that is to gain the love of Lord and to keep engaged in his devotional service with the guidance of spiritual master and devotees. So ambition should be there because something to achieve in life should be there. But greed, that is the will to do anything to achieve the ambition. No matter what, मुझे वो करना ही है, even by dubious method. ये greed है. Ambition should be followed by sensible approach and by guided approach. Otherwise, it's going to become chaotic. So thank you very much for joining me today. Our Bhagavad Gita classes will continue from next week, next Monday and Tuesday. So in the remaining part of the week,